from different countries, inspected people were there to as an exchange program. It was a very beautiful exchange program that the inspections done by the US FDA people were witnessing by the European people, and the European people inspections were witnessing by the FDA people. So they can understand what are the differences in the approaches and what are the differences in the understanding of the subjects. Again, the drug which is tested is not used, and the which is used is not tested. We know quality cannot be observed by by everyone or by naked eye. It is universally correct and true. Quality cannot be tested in laboratory, but has to be built into the product. It is very sensitive. We have multi attributes of each materials, and every attribute has some significant value on the promise of your drug. You know, whatever the drug you are manufacturing, every dose has to deliver the promise which is guaranteed, which is supported by the clinical studies of innovator. And we have to create a bridge between innovator clinical studies and a drug you are manufacturing after 10 years of the innovator, and every dose has to perform in the same way as the innovator is committed. And while the attributes, while the supply lines are so flexible, that's the issue, where you have to control the inspections, you have to control the process. The GMP intent resolves only around three things. One is consistency. Each time, your drug should be consistent to each other. Every time, every batch, within batch, batch after batch, time after time, every place, every unit should be consistent, whether it is a 1 day life or whether it is a 3 years life, should be consistent in performance, should be consistent in delivery of active pharmaceutical ingredient inside the biological system. Your batch should not be mixed up within batch with other drugs, with any other materials during manufacturing, during packaging, during dispensing. There should be less than zero mix-up. I can say consistency should be zero, but I cannot say it will be zero. There will be some measurable even differences, but within permissible limit. But for mix-up, there should be less than zero. And the third intention of the GMP is contamination. Contamination or cross-contamination. If you contaminate any other particles or any other substances or any dirt or dust, it's a contamination. If some other active pharmaceutical ingredient from somewhere else, whether it is a air, whether it is an individual, whether it is a common surface area, whether it is a human being, it is a cross-contamination. And cross-contamination has some permissible limit. And the permissible limit you can assess, you can try from the navigation which is delivered by the ICH quality guidelines. That is 0.1% of the lowest dose in the maximum daily dose of higher strength. This is the rule of thumb. Quality, initially we started quality with testing. Everything will be testing, and if it is qualified, we understand it is a representative sample. It means your batch is quality. And afterward, before 21st century, we witnessed a lot of recall, lot of quality defect after testing. So then we understand that the quality should be designed inside. The deeper science to connect the cause and effect relationship, we were able to understand the quality by design approach. And after quality by design approach, we see some recalls, we see some defects. Now we are going to see metrics, how many lot you have accepted, how many lot you have rejected, how many tests you have performed, and how many tests go out of a specification, and how many out of a specifications upon investigation come back to the original position. And this is called the matrix approach. And maturity, how mature your system are, what is the culture of quality you have, whether you report mistakes, whether you enjoy mistakes, whether you celebrate mistakes. Can you differentiate between mistakes and error? What is error? What is the reason of errors? And everything define your maturity level, how mature your system are, how enough, how the system is strengthened to control the quality. If drug
is manufactured in GMP environment. You are witnessing every drug which is manufactured in US or Europe. At least they are manufactured in GMP environment, what we believe. But we are witness that these drugs are subject to recalls, and we see from left to right recalls. We see import alerts. Why it is so? It is sufficient for quality of something remains null. We cannot comply GMP 100%. We can keep ourselves adhere to GMP, and the intention of the regulator must also be to see the intent of adherence with the GMP instead of to see 2 + 2 = 4, he will have to see the attachment of the GMP. And this is the thin line where European Union and FDA has some differences, where FDA is broader, somewhere European Commission is broader, European Union is broader. But these differences are underway, and you can see harmonization word, HOR, harmonization, where US is used Z and European is used S. So we are harmonized as a regulatory authority, but with some beautiful differences. One is using S and one is using Z. Both has their logic, and logic is always respected. After GMP, we keep eye open for surveillance, and this is called quality surveillance. We have vigilance, we have complaint systems, we have recall systems. There are surveillance and vigilance, and this is a difference. Unluckily, in Pakistan, we are saying surveillance is equal to vigilance and vigilance is equal to surveillance. Both has different meaning, and both somewhere both are overlapping, but both has different identity and both has different reasons. A complaint system in Pakistan is very, very poor. We even don't think to file complaint, and if someone file complaint, we do not respect in this way. Country like US and Europe is respecting. Recalls is a very good phenomenon of the system. But again, in Pakistan, I'm witnessing, I just read 3 days before a recall advertisement, there was no reason why it is recall. What will be the impact of the recall? There was no reason. There was no explanation. What should be done by the people or the doctor if something happened? These 3 are the integral part of recall system. If we are going to PICS, if we are going to ICH, we have to qualify our internal systems up to the standards that is expected by the international authorities or international frameworks. Some is misconception. Here, I believe most of the participants are from Pakistan. देखिए मैं 2-3 जुमले उर्दू में सिर्फ कहूँगा. Yes sir. सारे लोग पाकिस्तान से. जी कि PICS को अंधाधन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर दिया, नईम साहब की डिस्कशन के लिए इसको रखूंगा. हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं. We cannot manufacture drug up to the standard that is required by the US, that is required by the Europe. If we start, suppose हम ये करना शुरू करते हैं, बनाने में कामयाब हो जाए, तो हमें यकीन है कि आपकी 90% जो ड्रग्स हैं वो शेल्फ आउट हो जाएंगे. जो बकिया 10% ड्रग बचेंगी, उन 10% ड्रग्स को आवाम की रीच में वो नहीं जाएगा. तो हमें अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है. देखिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मीनिंगफुल एंड व्हाट इज मीनिंगलेस. We have to define very clearly what is good means morally good, ethically good, scientifically good, and what is bad, and where it is going, the corridor. What is right and what is wrong. If you ask me to keep ibuprofen with the paracetamol due to contamination, I will damn care about the Pakistan. Because the impact of this contamination will not harm enough that the impact of prednisolone with the antibiotic will cause. तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा. Again, मैं ये अपने जो दोस्त हैं, जो कलीग्स हैं, आसिम भाई, इन लोग से भी जिक्र कर रहा हूँ कि आप अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई करें. हमारे इनहेरेंट सिस्टम के अंदर डिसऑनेस्टी बहुत है, जिसको ओवरनाइट सही नहीं किया जा सकता. आपने देख लीजिए 2017 में हमने अप्लाई किया था PICS के लिए. PICS की हिस्ट्री देखिएगा, इतना लंबा टाइम किसी ने नहीं लिया.
आज 2022 अभी वो आएंगे और हमें अंदाजा है कि कहाँ पर हमारे जो मसाइल मौजूद हैं। यूरोप और अमेरिका में वाज़ा फर्क है। इन यूरोप वो डिजाइन कर लेता है 5 दिन का इंस्पेक्शन प्री अनाउंस होता है, लोग क्वालिफाइड होता है। मैंने यहाँ देखा है जो फ्लोर पे होता है ना वो ट्रेनिंग देता है। इन पाकिस्तान अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। दूसरी बात है कि अमेरिका में डिफाइन नहीं, वो चले गए इंस्पेक्टर, वो 10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, 30 दिन लगाएंगे। तो हमें पाकिस्तान को समझना पड़ेगा इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। दूसरी बात है कि आप यूरोप और अमेरिका को देखिएगा डिफरेंसेस। यूरोप में एक नई स्ट्रेटजी उभर रही है, नई साहब इज मोर क्लोज विद यूरोप, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। बाकी जो गूगल शुगल से हम पढ़ लेते हैं या जो जानने वाले दोस्त व्हाट्सएप से हमें शेयर कर लेते हैं कि वहाँ स्पेशलाइजेशन का दौर है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है इट इज कन्फर्म्ड इनफ कि उनका जो स्पेशलिटी होगी इंस्पेक्टर की इन यूरोप, वो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे उनमें से दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल इंस्पेक्टर्स नहीं दिए जाएंगे। बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए जाएंगे, बायोलॉजिकल के लिए, केमिकल ड्रग्स के लिए जाएंगे, केमिकल के लिए, स्टाइल के लिए जाएंगे, स्टाइल के लिए लोग। इन एफडीए इट इज नॉट सो, बट एफडीए और वो दोनों साइंटिफिकली इसको हार्मोनाइज कर रहे हैं और दोनों जो है वो अपना म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट पर हैं। तो पाकिस्तान को, मेरा जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपनी दवाओं को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी दवाएं वो हैं जो टॉप फ्रंट लाइन पर हैं, जिनके साथ हम PICS के अप्रूवल पर जाएं। आपने देखा, नहीं साहब ने बताया कि 50 मुल्क जो हैं वो PICS के साथ अटैच हैं, लेकिन 54 अथॉरिटीज हैं। तो बकिया 4 कहाँ से आए? बकिया 4 उन मुल्क ममालिक के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। कहीं पे वेटरनरी ड्रग अलग है, ह्यूमन ड्रग अलग है, कहीं बायोलॉजिकल ड्रग अलग है, ह्यूमन ड्रग का वो केमिकल ड्रग का इंस्पेक्टरेट अलग है। तो इसी तरीके से इस वैक्यूम को एंजॉय करें, अपनी ड्रग को क्लासिफाई करें। पर्सनली माय रिकमेंडेशन, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, अपने थ्रेट्स को जहन में रखिए। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनता जा रहा है। ऐसा ना हो कल कोई ऐसा कानून हम खुद अपने ऊपर लागू कर लें और उस कानून के नतीजे में या उस ऑब्लिगेशन के नतीजे में हमारी दवाएं शॉर्ट होनी शुरू हो जाए और शॉर्ट को रोकने की कोशिश करें तो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें जो है वो मुश्किल में डाल दें, जिस तरह आपने देखा आजकल हम मुश्किल में डले हुए हैं। तो PICS इतना देखिए, एक और बात ध्यान में रखिएगा, PICS is not only scientific organization, it's a political organization as well. यूक्रेन के ऊपर they have issued their press release, which is has clear meaning. फिर आप देखिए, अभी दुनिया की जो आधी आबादी है वो इंडिया पर, चाइना पर है। इंडिया और चाइना अभी तक PICS का मेंबर नहीं है, मगर मैं ये नहीं कहने जा रहा कि चाइना मेंबर नहीं बनना चाहता। चाइना मेंबर बनना चाहता है। आपको ध्यान में रखिएगा, सन 2000 में probably it was 90 or 2000, जब जब PICS वॉलंटरली उसने इनवाइट किया, इट वाज नवंबर और दिसंबर समवेयर, कि फर्स्ट जनवरी से वी विश टू सी US ऑन बोर्ड, वी विश टू सी यूक्रेन ऑन बोर्ड। दोनों ममालिक को, यूक्रेन को और US को उन्होंने इनवाइट किया। US ने उस जमाने में, अगर लोगों को याद हो, एक चीज थी, उसका नाम था जो रॉ मटेरियल को अप्रूव किया करती थी अमेरिका, CDQM, सेंटर EDQM, Eastman Directorate for Quality Medicine, और FDA has a mutual recognition agreement with EMA या EDQM, तो उन्होंने उसको छोड़ा हुआ था। लेकिन अचानक जब वो गए तो डजन ऑफ द इम्पोर्ट अलर्ट्स में लगा दिया कि GMP compliance is compromised while it was evaluated by the EDQM and European authorities. तो somewhere इस political pole मौजूद है, तो we should play our role with very care. हमें बहुत कॉपी करना चाहिए अपना पड़ोस जो है जिसने प्रोग्रेस किया है। आपकी जो भी टोटल बिजनेस दुनिया भर में जेनेरिक का है, उसमें जो सबसे ज्यादा जिसने प्रोग्रेस किया है वो है इंडिया। इंडिया has least interest in PICS. I'm not saying don't follow the quality standard. Please follow US standard. PICS standards उसके पीछे चला जाएगा। PICS की जो GMP के स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने सारे मौजूदात हैं, वो नईम साहब भी अगर एक मौजू को उठाते हैं तो हमारा पूरा दिन लग जाएगा उस मौजू पर। सिर्फ वाटर को डिस्कस करना हो, सिर्फ रिव्यूज को डिस्कस करना हो, इंशाल्लाह अगर गजनफर साहब और ये मौके प्रोवाइड करते हैं तो we will share our knowledge, we will share our experience, we will share whatever we read, whatever we know, whatever we understand, कि ये इन डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं, गाइडलाइंस, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो क्यों नहीं हम अपने इंस्पेक्टरेट को क्वालिफाई करें दुनिया के स्ट्रिंजेंट सिस्टम पे, चाहे वो FDA हो, चाहे PICS हो, चाहे यूरोपियन अथॉरिटी हो। PICS कहीं पर अगर रिलैक्स भी है, सपोज PICS यूरोपियन कमीशन के बहुत करीब है, यूरोपियन यूनियन के, और मैं देखता हूँ कि PICS रिलैक्स है इसमें कि जी हम 5 दिन का इंस्पेक्शन करेंगे, वो प्री अनाउंस इंस्पेक्शन है। US इज नॉट बाउंड्री नहीं करता। US
ने ओपन रखा हुआ है, प्री अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल, फॉर कॉस्ट, उसने एक्सपर्ट बना लीजिए इंजीनियरिंग का, एक्सपर्ट बना लीजिए केमिस्ट्री का, एक्सपर्ट बना लीजिए माइक्रोबायोलॉजी का, ओपन फ्लेक्सिबल। तो व्हाई नॉट हम कंप्लाई करें यूएस स्टैंडर्ड को। तो PICS इज द बेस्ट टूल कि इसके साथ हम स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। PICS बहुत स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन याद रखिएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका प्रोडक्ट सही डेवलप नहीं हुआ है, प्रोडक्ट सही परफॉर्म नहीं करता है, सही रिलीज नहीं करता है, सही कमिटमेंट पूरे नहीं करता है, तो उस प्रोडक्ट को जो सही रिलीज नहीं कर रहा, सही बायो अवेलेबल नहीं है, सही थेरेपेटिक रिस्पांस नहीं दे रहा, बार बार एक जैसा नहीं बन रहा, ऐसी प्रोडक्ट को अगर आप कंसिस्टेंट बना भी दें, ऐसे प्रोडक्ट को आप जब भी बना भी दें, तो मीनिंगफुल नहीं होता। कभी मौका मिला तो मैं आपसे यूएस के फेलियर्स शेयर करूंगा कि वो कहाँ पे इंस्पेक्शन पे फेल हो गए। ये मुख्तलिफ सवाल थे जो जो मुझसे लोग करते थे, और उसको मैंने कंपाइल कर दिया था, और वो अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिएगा कि डू द मेंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अच्छा, कंपनीज का PICS से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि PICS ICS का कंपनी से ताल्लुक है। वहां पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बैठी हुई है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट में था, अब मैं चाहूँ PICS वालों से बात करना, PICS मुझे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट जिनको अप्रूव करेगी, जिनका नाम देगी, वही बात करेंगे। नो, PICS हैज नथिंग, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच माइट नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, बट मैंने बहुत केयर की है इससे जवाब देने में, बहुत जिम्मेदारी से जवाब दिया। अगर कोई गलती होगी जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा। आई विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन। PICS has nothing to do with the pharmaceutical companies or manufacturer association. Go to the website of the PICS, किसी कंपनी का नाम नहीं है, whether it is Abbott or Zafa or Pfizer or GSK. It is limited to the regulatory authorities. सिर्फ regulatory authorities का नाम है इनके पास। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, मैं जल्दी खत्म करूँ। PICS एक गुड स्ट्रेटजी फॉर ड्राइवर पाकिस्तान, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये गुड स्ट्रेटजी नहीं है मेरी नजर में। If facility is inspected by World Health Organization, अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, World Health Organization is not the regulatory body. WHO is not the regulatory body. WHO is intergovernmental organization, or you may call non-governmental organization. चूंकि लीगल बाइंडिंग है हमारे साथ, इसलिए इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और WHO का जो इंस्पेक्टरेट है वो बहुत लिमिटेड इंस्पेक्टरेट है। मैंने 2 साल उसके साथ WHO के साथ एसोसिएट रहा हूँ, उसके अंदर इनकी इंस्पेक्टरेट ऑब्जर्वेशंस के अंदर। तो WHO का जो ये नहीं कहने जा रहा कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो मुझसे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो नॉलेज बैंक US और यूरोप का है उसके मुकाबले में बहुत कमजोर है WHO का नॉलेज बैंक, खासतौर पे GMP के ऊपर। ऑल्दो यूरोपियन नॉलेज बैंक वहाँ पे ट्रेन हो रहा है और वो उस तरह से नॉलेज जनरेट हो रहा है, लेकिन रियल टाइम नॉलेज जो WHO की है वो लिमिटेड है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं, लिमिटेड कंट्रीज हैं जहाँ पर डिस्कस कर रहा है। WHO इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेम PICS is an intergovernmental organization, it's an intergovernmental club, whatever you may call it. Does PICS tell about the PICS approved facility? PICS की वेबसाइट पर PICS कभी नहीं कहेगा it is PICS approved facility. वो कहता है कि these are PICS member, this inspectorate जो है उनको हम कंसिडर करते हैं। ये जो इंस्पेक्टरेट हैं, ये जो काम करेंगे वो PICS के स्टैंडर्ड पे काम करेंगे। PICS इस बात की जिम्मेदारी जरूर लेता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट ये कंपनी हमारी मेंबर है। वो रेट्रोस्कोपिक नहीं देगा, जब से उसने मेंबर किया है उससे लेकर जब तक उसको रिन्यूअल ना करे उस वक्त तक का वो लेता है PICS। If a PICS members issue, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा इसके पहले, if any PICS member GMP सर्टिफिकेट इशू करता है वो फैसिलिटी को, तो दूसरे मुल्क इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यूरोपियन कमीशन के अंदर इट इज यस, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट मौजूद है। यूरोपियन कमीशन का US FDA के साथ MRA मौजूद है विद सर्टेन इफ बट, उसके साथ अगर आप लोगों ने वो MRA पढ़ा हो। यूरोप एंड US हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ MRA, म्यूचुअल रिलायंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्पेक्शंस वो मौजूद हैं, तो वो मौजूद है। हाँ, PICS एक क्लब है, उस क्लब में जब लोग मिलते हैं वो PICS प्रमोट इस बात को जरूर करता है कि अपने दरमियान आप म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट करें, ताकि PICS के जो मजे हैं वो कर सकें, आप रिड्यूस कर सकें अपने बर्डन्स को, आप एंजॉय कर सकें दूसरे की नॉलेज को। ये PICS जरूर चाहता है। Is GMP certificate issued from PICS office Geneva? नहीं जी, ये PICS ऑफिस GMP सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, ये बात सही नहीं है। If any finished drug product is pre-qualified by WHO after application, review and inspection of the manufacturing facility,
Will the same finished drug product be considered approved in US and Europe for their market? मैं बहुत सच्चाई से कहूँ, WHO अप्रूव प्रोडक्ट को आप फ्री अमेरिका में दें, हम फ्री दे रहे हैं आपकी आवाम को, वो उसकी मार्केट में नहीं रखा जाएगा। कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इससे कोई कंसर्न नहीं। US FDA अपनी शेल्फ के ऊपर वही प्रोडक्ट रखेगा जिसका प्री मार्केट रिव्यू वो पूरा खुद कर ले, जिसका प्री मार्केट इंस्पेक्शन वो पूरा कर ले, या इंस्पेक्शन के ऊपर ट्रस्ट कर ले। इवन आप देखिए, कोविड का मामला आया और क्लोरोक्विन वाज बायर कंपनी की क्लोरोक्विन थी, आप लोगों को क्योंकि उसमें बैठा हूँ आपसे शेयर करने के लिए, पाकिस्तान में क्लोरोक्विन बनी थी, दुनिया में नहीं बनी थी, वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से नहीं जा सकी, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जिक्र किया था, FDA कमिश्नर के सामने जिक्र किया था। लेकिन मामला कहाँ पे आके अटका? मामला यहाँ पे आके अटका कि उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कभी इंस्पेक्ट नहीं किया गया है। विद ऑल ड्यू अपॉलजी एंड कंसर्न, जब उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स उनकी उठाई कि भाई इस फैसिलिटी को कभी इंस्पेक्ट नहीं किया गया, तो किसी और ने इंस्पेक्ट किया है, तो अनलकीली इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो थी वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर हमारी थी, मतलब मेरी थी। और आपने देखा होगा ट्विटर, वहाँ अमेरिका के ट्विटर अखबार ने भी इसको पब्लिश किया। इस बुनियाद पे वो दवा जो बहुत मुश्किल से पहुंची थी अमेरिका, जिसका प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था, अमेरिका के ताकतवर मुल्क के ताकतवर प्रेसिडेंट ने, वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से बाहर पब्लिक तक नहीं पहुंच सकी, वो इस्तेमाल नहीं की गई क्योंकि उसका GMP नहीं किया गया था। दिस इज द रेगुलेटरी लिमिटेशंस। Can a drug manufacturing facility have GMP certificate from any PICS member country be exported? All of the is very simple. No. जहाँ पे MRA है, सिर्फ GMP is one thing. Other thing is the approval of your dossier. डोजियर को भी अप्रूव करना पड़ेगा। आपका देख लीजिए, आपका ईरान पड़ोस का मुल्क है, वो GMP सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड है, वो PICS का मेंबर है, तो ईरान की ड्रग नहीं जा सकती। आपका कोरिया PICS का मेंबर है, आपका लैटविया मेंबर है, आपका इस्टोनिया मेंबर्स है। तो मेंबर GMP कंप्लायंस के हैं। GMP कंप्लायंस इज गुड कि ये बिस्किट में भी जाए, टॉफियों में भी जाए, या कैंडीज में भी जाए। GMP सर्टिफिकेट अकेला जो है वो नहीं कहता कि आप इस ड्रग को ले लें। GMP इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से GMP रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिव्यू के लोग कहते हैं कि वी आर द हार्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड मैं समझता हूँ कि हार्ट से ज्यादा जो है वो आर्म्स का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहाँ पे काम करना है तो GMP इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रिव्यू। This is my personal understanding. PICS, what should be the concern? We have discussed a lot. Just last slide. Factory mix-up returns up to 5 million vaccine doses from Johnson Johnson. ये 2021 है. US FDA and European Medicine Agency के पास mutual recognition agreement है, mutual reliance strategy है, similar tools हैं. कंपनी एस्ट्राजेनेका यूरोपियन ओरिजिन कंपनी है, जॉनसन जॉनसन अमेरिकन ओरिजिन कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद जहां सिर्फ वैक्सीन बन रही थी, सिंगल कोविड वैक्सीन बन रही थी, मिक्सअप हो गया। क्या FDA विजिलेंट नहीं थी? क्या FDA ने जो क्वालिफाई किया था, जिस बुनियाद पे भी क्वालिफाई किया था, वर्चुअली किया हो, फिजिकली ऑडिट किया हो, सिस्टम को समझने पढ़ने के बाद किया हो, वो कितनी कमजोर थी, वो इससे आप देख सकते हैं कि GMP कंप्लायंस है सम इनहेरेंट इशू। एक ही प्रोडक्ट बन रही थी, वहां पे मिक्सअप हो गया, इंग्रेडिएंट का मिक्सअप हो गया, और आप जानते हैं फास्फो जो उसके ऊपर अब मैं उस पर डिटेल में क्या पढ़ूं, जो रिएक्शंस कॉज हो रहे थे उसकी वजह जो थी वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह थी, जो कि मिक्सअप हो चुका था। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू हु लिसन अस, और खासतौर पे नईम साहब, खलीफा साहब, एवरी पार्टिसिपेंट, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। If Dr. Ubaid want to add something into it, so that's the answer. जी, thank you very much. Just for information, 18 September. Sorry, Rafael. Just I'm talking about in Urdu because it is difficult and hard sentence. 18 सितंबर को 2017 ड्रैप ने अप्लाई किया था PICS को, and it was March 2021 when हमारा जो एप्लीकेशन है वो टर्न डाउन कर दी। और टर्न डाउन करने का मतलब ये इट इज सेट असाइड, और ड्रैप उसी वक्त एप्लीकेबल होगी, एलिजिबल होगी जब कंपनीज कैपेबल हो। ड्रैप ने लेटर्स इशू कर दिए कि हम PICS के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो लिहाजा कंपनी के पास यही टाइम है कि क्वालिफाई करवाए, अपने आप को स्टैंडर्ड डेवलप करें। तो ड्रैप के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो PICS के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करवाए। दैट्स द इशू। तो इफ द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू क्वालिफाई PICS स्टैंडर्ड, ड्रैप विल नॉट बी एलिजिबल टू क्वालिफाई PICS मेंबरशिप। Okay, thank you, Rafael. Dr. Ubaid, there is a question
there are two questions. So one belongs to you as well, or might be we both can answer. So does DRAP planning to incentivize the early PICS adopters? This is a question from the CFO of Firosans. So if you can take this question, please. I'm unaware about the formal incentive any DRAP is offering, but I know well since last 20 years, flexibility in the enforcement are offered for those who are complying best than others. Dr. Saab, would you like to say something, or? It is correct. Whatever Rafael said is correct. If a regulatory authority has scope to conduct medical device inspections and the regulatory authority is a member of PICS, it doesn't mean that they are complying the PICS standard, because PICS doesn't issue the standards for the medical devices till date. Mr. Abid Rafiq had a question. Should I ask, or names how you would like to put it up? I think Dr. Obaid should be the right person to answer this. That is there any timelines for PICS implementation in Pakistan? So I was unable to actually see it, but yes, Dr. No Saab, problem. and then I can. Thank you very much. If Pakistan qualifies PICS as a member, there is zero timeline now. If Pakistan qualifies, you have to qualify the standards which is expected by the government of Pakistan, and Pakistan is obeying the standards that is defined by the PICS.